Hello students, welcome to lecture number 8 of this nuclear physics course. In this lecture, we are going to discuss about mass defect and binding energy. Students, we already know about the binding energy of a hydrogen atom. You know, when a proton and an electron they are bring together to form a hydrogen atom, then an amount of energy which is equal to 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज्ड. ठीक है, जब एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके हाइड्रोजन एटम बनाएंगे तो इतनी एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगी. ओके, इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है? रिवर्स प्रोसेस ये है बच्चों दैट इफ़ यू प्रोवाइड एन एनर्जी which is equal to 13.6 electron volts to the hydrogen atom, then the constituents of hydrogen atom, there are proton and electron, they are separated to large distances and we can say that they become free. Okay, so this amount 13.6 electron volt of energy, this is called binding energy of the hydrogen atom. What is called? This is called binding energy of hydrogen atom. So I have written here that 13.6 electron volt energy must be supplied to hydrogen atom in ground state to separate the constituents to large distances. That is 13, when we provide an energy equal to 13.6 to the hydrogen atom, and when it is in a ground state, the binding energy of the hydrogen is 13.6 electron volt when it is in a ground state. So we get free proton and a free electron. Okay, now come to the case of a nucleus. Let's come to next page. In case of a nucleus also, if we have this nucleus having a mass represented by capital M, and if we provide it an energy, if we provide energy which is equal to binding energy of the nucleus, then all the constituent particles of the nucleus they become free. Free means there will be no interaction, they are not bound within a nucleus now. Or in a reverse process we can say, if we have a large number of free nucleons, that is they may be protons or neutrons, and they are free. Free mean to say that there is no interaction, and we form a nucleus with these free nucleons by bringing them together and together within a nucleus. Now they are in bound state within a nucleus. So this amount of energy, exactly the same amount of energy which is called the binding energy, is released. So you can say the binding energy is the energy with which nucleons are bound within the nucleus, or we can also define binding energy is the binding energy is the amount of energy required to separate all the nucleons required to separate all the nucleons to large distances so that there will be no interaction between the nucleons. So I hope आपको binding energy का concept समझ में आ गया होगा. That let me repeat again. In case of a nucleus, the binding energy is the energy with which electrons are bound, or the energy that is released when with which nucleons are bound, or the energy which is released when free nucleons are bound within a nucleus to form a nucleus. Then this amount of energy is released, which is called binding energy. Okay, now let's come on to the next page. Students, in this process of formation, let's say we have Z protons and A minus Z neutrons in a nucleus. So when protons and neutrons are in free state, when they are in free state, then we have the total mass is Z into mass of one proton and A minus Z into mass of one neutron. This is the total mass of all the nucleons when they are free. Free nucleons का mass, and then they are brought close together to form a nucleus. Then mass of that nucleus comes out to be capital M. We represent it by capital M. So it is always found that there is mass of this nucleus is less than the mass of free nucleons, free constituent nucleons of that particular nucleus. So there is मास डिफेक्ट. दोनों के मास में डिफरेंस जो है उसको बोलते हैं हम मास डिफेक्ट. मास ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स
that is mass of free protons and mass of free neutrons, and this represent mass of a nucleus which is made up of these nucleons. So this difference in the mass is known as mass defect. And this mass, how this mass disappears, this mass actually changes into energy, and that energy is called binding energy. So binding energy can also be written as binding energy is delta m into c square. That this is, it is given by mass energy equivalence, that E is equal to mc square. This relation is called mass energy equivalence given by Einstein. Let us discuss this with an example also. Let us discuss the case of deuteron. In case of a deuteron, we have one proton and we have one neutron. We are given that mass of a proton is 1.0073 atomic mass unit, and mass of neutron is also given, that is slightly greater than the mass of proton, which is 1.0087 atomic mass unit. And the mass of deuteron is the nucleus of deuterium, it is given as 2.0136 atomic mass unit. So when this free proton and the free neutron, they are bring close together to form the deuteron. जब इनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिला के आप ड्यूट्रॉन बनाते हो, तो ड्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंबाइंड मास से कम मिलेगा आपको, and this comes out to be equal to 0.0024 atomic mass units. So this is called mass defect, which is represented by delta m. Let's come on to the next page. Now students, we have written that binding energy, we have written on last page that binding energy is equal to Z into mass of a proton plus A minus Z into mass of a neutron minus mass of the nucleus, let's say a nucleus of an atom which has a chemical symbol X. Okay, this is binding energy till now. But most of the cases we use atomic masses instead of nuclear masses, because we have frequently available atomic data of atomic masses. So in place of mass of a proton, we have used here the mass of a hydrogen atom, and in place of mass of the nucleus of X atom, we are taking here mass of the nucleus of mass of X atom itself, not nucleus. यहाँ पे क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस किसका, जिस एटम का केमिकल सिंबल X है. तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, दिस इज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज मास ऑफ X एटम. एटम का मास है, दिस इज M रिप्रेजेंट्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड दिस रिप्रेजेंट मास ऑफ एटम इटसेल्फ, दैट इज X, न्यूक्लियस का नहीं. तो जब हम मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ हाइड्रोजन से रिप्लेस करते हैं, उस केस में क्या होता है बच्चों, इसमें कितना है, देयर आर Z इलेक्ट्रॉन्स इन Z हाइड्रोजन एटम. अब Z हाइड्रोजन एटम्स में Z इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मास एडिशनल है, वी वर डिस्कसिंग ओनली अबाउट प्रोटॉन्स. तो ये जो एडिशनल मास है ये कैंसल आउट हो जाता है, क्योंकि Z इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में भी हैं. Z इलेक्ट्रॉन्स का मास यहाँ एडिशनल आया, लेकिन Z एटम जो आपका एटम है AXZ, इसमें भी Z इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर Z है, Z प्रोटॉन्स और Z इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो Z इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, Z इलेक्ट्रॉन्स Z हाइड्रोजन एटम्स में हैं, तो ये आपस में मासेस कैंसल आउट हो जाते हैं. तो इस इक्वेशन में दैट्स व्हाई वी कैन टेक एटॉमिक मासेस इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियर मासेस, क्योंकि इससे हमारा जो है देयर इज ए नेग्लिजिबल एरर होगा, पर वो नेग्लिजिबल होगा व्हेन वी टेक एटॉमिक मासेस इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियर मासेस. बट इन केस ऑफ बीटा डिके वी यूजुअली डू नॉट टेक दिस, that is the mass atomic masses. We only calculate with the atomic nuclear masses if in case of beta decay. So I have written here that there are Z electrons and Z hydrogen atoms. देखिए Z इलेक्ट्रॉन्स होंगे Z हाइड्रोजन एटम्स में, और Z इलेक्ट्रॉन्स ही आपके एटम में जिसका केमिकल सिंबल X है. ठीक है. सो मासेस ऑफ एटम्स विद Z इलेक्ट्रॉन्स
masses of the atom with z electron cancel out in this equation, so atomic masses are rather frequently used in place of nuclear masses. लेकिन हालांकि ये डिफरेंस जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. एक जब हाइड्रोजन एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन के अराउंड अबाउट एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है हाइड्रोजन के एटम में, न्यूक्लियस में क्या होगा, एक प्रोटॉन, और प्रोटॉन के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो वो भी एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ, जिसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी अभी हमने देखा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लेकिन जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, वी डील विद एनर्जीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज नेग्लिजिबल, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नेग्लिजिबल in when we take nuclear calculations. So we can neglect that factor, that electron with the nucleus, that the binding energy of electron with the nucleus is neglected here. But such calculations do not work in the beta decay. In case of beta decay, we will see in the further lectures that in case of beta decay, we cannot neglect this amount of energy and we have to take the exact values. Okay, so let's come on to the next section. Next page. Students, till now we are discussing about binding energy, but a term which is called as average binding energy per nucleon is rather more useful instead of binding energy. And what is average binding energy per nucleon? एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी देंगे, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलेंगे. अगर आपको सारे ही न्यूक्लियंस न्यूक्लियस से बाहर निकालने हैं तो फिर आपका टोटल बाइंडिंग एनर्जी एक ही निकालना है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. सो द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी per nucleus. Okay, so binding energy, total binding energy, when divided by the total number of nucleons, we get the binding energy per nucleon, and this is simply given by dividing the expression for binding energy by A. Okay, let's come on to next page. Now we will discuss understand it further with the help of example. We have an example that calculate the binding energy per nucleon of the lithium nucleus. और गिवन क्या है बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन हमें प्रोवाइड कर रखा है. वी आर प्रोवाइडेड विद मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ द लिथियम न्यूक्लियस इटसेल्फ है. So in case of nucleus we have to find out here firstly we will find out mass defect. हम mass defect का पता करेंगे. तो mass defect कैसे पता चलेगा, एक लिथियम का न्यूक्लियस है, उसमें 4 आपके न्यूट्रॉन्स हैं और 3 आपके प्रोटॉन्स हैं. तो 4 प्रोटॉन्स, जब वो फ्री प्रोटॉन्स और फ्री प्रोटॉन्स और फ्री न्यूट्रॉन्स है, ध्यान रखना. तो जब 4 फ्री न्यूट्रॉन्स का मास कितना है, 4 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड 3 प्रोटॉन्स है वी हैव. तो 3 प्रोटॉन का जो व्हेन दे आर फ्री, 3 प्रोटॉन का मास कितना होगा, 3 इंटू दिस वन. ये हमें प्रोवाइड कर रखा है, इट इज़ गिवन. तो ये कैलकुलेट करके हमने निकाल लिया मास ऑफ 4 प्रोटॉन्स, मास ऑफ 4 न्यूट्रॉन्स एंड मास ऑफ 3 प्रोटॉन्स. नाउ when we add this total mass, this is the total mass of free nucleons. जब आपके 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन जब वो फ्री स्टेट में हैं तो उनका मास इतना है. लेकिन जब उनसे आप लिथियम के न्यूक्लियस को बनाएंगे तो उनका मास कितना होगा, इतना, क्योंकि मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस दे रखा है. तो देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस है और इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट. ये मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. सो मास डिफेक्ट इज दिस माइनस दिस विच इज गिवन बाय दिस वन. ये सिंपल प्लस माइनस कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. नाउ वी हैव दिस अमाउंट ऑफ मास डिसअपियर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिथियम न्यूक्लियस with the help of 4 neutrons and 3 protons. Okay, so binding energy will be given by, this is delta m into c square. We have delta m is this one. अब 1 AMU को मास को हम एनर्जी की टर्म्स में लिखेंगे. सो वी कैन राइट 1 AMU एज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट c स्क्वायर. नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि हम 1 AMU को ऐसा क्यों लिख सकते हैं. ठीक है, तो वी विल राइट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट c square instead of AMU. So let's write this is the mass defect in AMU. AMU को हमने रिप्लेस कर दिया, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट हो जाएगा. आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 13.095 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
तो ये है आपकी एनर्जी हुई, बाइंडिंग एनर्जी है आपके लिथियम न्यूक्लियस की. लिथियम न्यूक्लियस मीन्स विच हैव 7Li3, 4 protons, 4 neutrons and 3 protons. So we have to calculate, this is the mass number, this is the total number of, अब न्यूक्लियॉन्स कितने हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, दिस इज इक्वल टू मास नंबर ए विच इज गिवन बाय 7 and we have to find out binding energy per nucleon. So this is total binding energy divided by the number of nucleons, so we get the binding energy per nucleon. So this is what we have to calculate. Let's come on to the next example. If we are asked that what is the energy carried by an electron, it is not, we are discussing about rest mass energy, we are not discussing about kinetic energy. कुछ नहीं लिखा हुआ है that whether it is kinetic energy or potential energy, no. मोशन के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है. आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि एनर्जी कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन, so even when electron is at rest, then it will have only rest mass energy, and that is what we have to calculate. So we know that mass of electron is this one, and if this mass of electron disappears, then how much energy is released? This is the amount of energy carried by an electron. So mass into c square, so E is equal to mc square. Using the mass energy equivalence relation, we have put it here, mass of electron, and this is into c square, that is c is the speed of light in vacuum. So this comes out in joule because this is in kg and here this is in meter per second. So when we use SI units, so एनर्जी का यूनिट भी कितना होगा, जूल में होगा. तो SI यूनिट सारे हैं तो जूल में होगा, बट नॉर्मली हम न्यूक्लियर फिजिक्स में एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में लिखते हैं. तो आप जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को 1.6 इंटू 10⁻13 से डिवाइड कर देंगे, और जो आपका एनर्जी आएगा वो -0.5 या 0.5 भी लिख देते हैं, या 0.511 mega electron volt. This is the energy carried by the electron, or you can say this is the rest mass energy of electron. इसी टाइप से 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU आपको पहले बता रखा है, पहले के लेक्चर्स में आप देख सकते हैं कि 1 AMU का मीनिंग क्या है. तो 1 AMU इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. And when this mass is converted into energy, again following the same procedure, we have 1.6 into 10⁻⁻27 into c square divided by this term to convert the energy units from joule to mega electron volt, and then we come on to the expression that 1 AMU is, when disappeared, then this much amount of energy is released, that is 1 AMU is 931.5 mega electron volt. So that's all for this lecture, students. We will meet in the next lecture. Till then, thank you.